Really, I'm very much thankful for giving me the opportunity. It's a good platform to share my experiences with the large number of the audience. As I'm the chairperson of the Department of Social Work, I'm from the discipline of the social work. So I will discuss today just to share my experiences on the discipline of social work and how the social work may contribute toward the personality development of the individual. Being a teacher, we are also the individual member of the society, and it's very much necessary that the positive direction must be in the discipline of the personality development. If we have a good personality, certainly we can achieve number of things in our life cycle. So coming to the next, first coming to the what the definition of this social work at the global level. Now it's a global definition. Initially, it was the definitions in of the social work in general, but at the global platform, the definition has now been changed as as we know that social work is really a practice-based profession. In the social work, whatever we know, we try to do the practice to welfare of the public, society, individual, group members, community members of the society. So it is a practice-based profession, and on the other hand, it is also the academic discipline, and that discipline promotes the social change and development, social cohesion, and the empowerment and the liberation of the people. It means to say that when we talk about the social change and the development, certainly there will be the empowerment of the individual, and the people will feel better in the society. Certain principles are followed in the social work, that the principle of social justice, human rights, collective responsibility, and the respect for diversities are the central to social work. So social work focuses over the social justice, it protects human rights, it shares collective responsibility, social responsibility, and really it respects for the diversities of the society, and social science, humanities, and ingenious knowledge. Social work engages people, means to say people's participation, community engagement, engagement of the individual, engagement of the groups, of the society, of the community, and really it addresses the life challenges, and by doing so, it enhances the well-being of the members of the society. सर Social work स्लाइड मूव नहीं कर also, रही, स्लाइड मूव नहीं कर रही। slide नहीं दिख रही है? मूव नहीं हो रही सर। ओके फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है सर, सिर्फ अभी टाइटल स्लाइड दिख रहा है सर। अच्छा, ओके ओके ओके, प्लीज वेट अ मिनट प्लीज। Sure, sir. Sure, sir. Good नहीं कर सकते। अब हो रही मूव, दिखलाई दे रही? नो सर, सर मूव नहीं हो रही अभी। सर दिखाई दे रही है लेकिन मूव नहीं हो रही है स्लाइड। ये सोशल वर्क, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये है आपकी फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क। ये सर अभी नहीं नहीं आ रहा है सर, मूव नहीं हो रही है। फर्स्ट फर्स्ट पेज ही है सर अब हो रही है, नहीं हो रही है। हो गई हो रही है सर। ये सर मूव हो रही है।
सर सेकंड स्लाइड नहीं आई अभी, सेकंड थर्ड फर्स्ट के बाद डायरेक्ट देखिए, this was the Yes, first sir, slide, okay. the definition of the social work. सर दिख रही है. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. The ठीक है, sir. definition of that social work is to enhance. Now it's moving. यस सर. Okay. Okay. Yes, sir. So I was talking about the social work, and the social work tries to enhance the social functioning of the individually, whether singly and in the groups, by doing certain activities which are focused upon their social relationship and which constitute the interaction between man and his environment. It means to say, the social work really focuses upon the social relationship of the individual, of the group, and by doing so, it develops the interactions among the अच्छा people अच्छा in this domains. अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक. आओ आओ आराम मीरा से. मैम, हाँ. please mute your mic. But mute. Dr. Reena, please 2 घंटे पहुंचा देगी. mute your mic. Please mute your mic. Okay. Now coming to the what are the different fields of the social work, from where the intervention of the social work will benefit the individuals, groups, or the community of the society. First one is the economic and social development. Second, education, educational empowerment. Third one is the child care. Next one is the health of the individuals. Then the mental health, and it provides the legal assistance. Those who are not able to bear the cost of the legal affairs. Then vocational rehabilitation and the correctional help is provided by the professional social work. Social work is a complex activity. Complex in the sense it involves different types of the activity. But it often has no absolute solution. We have to take decision according to the situation, according to the case, according to the group problem, according to the problems of the community, on the basis of the identification of the problems, whether it's individual or the groups or the community. We have to take always the different types of the decisions. So different solutions may be taken place, but there is no absolute solution that it is a solution which will be applicable in all circumstances. So social work really has the complex activity, but it has the different types of the solution to the different problems faced by the members of the society. That's why it is really related or connected with the set of the circumstances, and the social worker sometimes may not have dealt with the previous problem. The problem may be the new for the social worker. So in accordance with the problem, issues, nature of the problem, symptoms of the problem, the decision is taken by the social worker for in the favor of the individual or the groups. Then certain values are relating to the professional social work, being an individual of the society, being a responsible citizen. Social work focus upon the worth and dignity of the individual. Every person who is living in the society has his own worth, capacity, dignity, and it is our duty to respect the worth and dignity of the individual. The individual has also the capacity to achieve full potential, so we must respect the capacity of the individual for his own potentials. We must also provide certain platforms
certain resources for development of the capacity of the individual. No doubt, there are different types of the differences among the individuals in the society. So the social work focuses that there shall be the tolerance of the differences while dealing with the issues and problems of the members of the society. Then, social work focus and have a value to satisfy the basic human needs. Actually, different types of the needs the individual has. So, that may be the physical need, that may be the social need, that may be the psychological need, that may be some other needs. So, firstly, we try to identify the needs of the individual accordingly. We do the whole process of the social work and then come to the social work intervention in order to in order to meet out the felt need of the individual, means to say enabling the person, enabling and developing his capacities, capabilities, so that he may become able to solve his problem by himself. So firstly, we try to identify the needs of the individual. Then we formulate a diagnosis that what the nature of the problem the person is facing, what is the precipitating factor for the causation of the problem, what the nature of the problem at present, and what efforts the individual has taken for the solution of the problem. When he fails to solve his problem by himself, then he visits to the professional social worker. Then accordingly, the social worker make the intervention, social work intervention, in order to solve the problem and fulfill the need of the individual. We are not doing the charity. We are really joined together for developing the abilities and capabilities of the individual, so that without the help of the others, he may solve his problem by himself. And it also focuses upon the liberty of the individual. And then there is a need of this self-direction, means to say the client, the individual may have certain opinion about his problem. He may decide as to what the problems may be and how the problems may be resolved so far. So self-direction of the client is important, and at the time of the interaction with सर ना आवाज आ रही है ना स्लाइड Nice, nice, nice. सर यू आर नॉट ऑडिबल एट दिस टाइम सर लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क I प्रॉब्लम। think network issue. एक्चुअली लाइट चली गई, इसलिए कंप्यूटर से नहीं, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ। Okay, sir. जी जी ओके ओके सर So I have joined with the mobile. When there will be the power supply, then I will again join by the computer. So I was discussing about the fields of the social work. It is difficult for me to share the slides from my mobile phone. So I'm reading out for that one. Now I'm trying.
Yes, sir. ठीक से हो रही है slides. शो हो रही है सर. अब स्लाइड शेयर हो रही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible, sir. ओके. तो मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द सोशल वर्क, वैल्यूज पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेल्फ डायरेक्शन पे थे. अब आते हैं कि अगले अगले वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क क्या है. पहली बात तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, मीन्स टू से at the time of solution of the problem of the individual, we should never be non-judgmental, means to say we shall never condemn the clients, we shall never take the negative aspect of the client, but positive aspect must be taken, and we must talk about the how to enhance the strength of the individual. So at the time of the solution of the problem, we shall never condemn the guilt or the work done by the client. So we must be non-judgmental towards the problem of the client at the time of the interaction with the individual member of the society. Then it's very necessary that there shall be the construction of social cooperation. While we are dealing with the group member of the society, the community member of the society, it's necessary that the people's participation must be there. And that's why social cooperation, there are different tools and techniques to achieve the social cooperation. We know about the PRA and PLA technique. By way of that, the individual member of the society are involved in identifying their problems, then what are the resources available in the society, in the community, and how these resources will be accessible to the member of the society. So through PRA and PLA, we try to construct the social cooperation among the member of the community. Really, there is an importance of the leisure time and how it will be used so far in favor of the client. It is the uh, task of the social work and its value which we must honor about the leisure time of the individuals, of the groups, and accordingly how it will be utilized in their favor. We will have to take certain steps towards the solution of the problem. Then another value is that the social work provides the protection to the individual, to the nature, from the different types of the dangers caused to them. And in that sense, the social work really develops the network with the people who are working in the discipline of the certain disaster management or some dealing with the dangers of the society, and by doing so the social work tries to solve the problem of the individual. Then in the eyes of the social work, certain roles the social worker plays in the society. First one is the case manager, the mobilizer, facilitator, advocate, administrator, and the social change agent. These are certain areas where in which the social worker can play very important role. As a case manager, we can say that different types of the cases are coming before the practitioner, before the professional social work, and the problems of the individuals are varies according to the case of the client, and accordingly the social worker tries to manage every individual
accordingly in the light of the social work profession. Then in the community, in the group activities relating to the certain issues of the society, problems of the society, available resources, government's policies, programs, the social worker tries to mobilize the community for the utilization of the resources, for the accessing to the resources provided by the government for community development. So the social worker mobilizes the community, mobilizes the individual, mobilizes the groups for utilizing certain facilities provided by the local level government and as well as the state and the central government. As a facilitator, the social worker facilitates different types of the services provided to the individual, to the society and the groups. So as a facilitator, he plays very important role. He facilitates the things to the individual and the groups for their solution of the problem. In social work discipline, advocacy plays very important role. The worker advocates about the things which are available in the surrounding society, surrounding environment, and to how to deal with the situation and how to avail the opportunities provided by the local level people, local level government authorities, and how to cope with the situation, how to deal with the situation and to come to the mainstreaming in the society. So social worker plays very important role as an advocate in the in social work intervention. As an administrator, it is a role of the social worker to administer the thing, how to implement the policy, the program, how to administer and manage the things of the society. So as the administrator, he plays very important role in the solution of the problems of the society. And then certainly as a social change agent, very important role the social work plays for the change of the individual, for the change of the groups in the society. So these are some background about the social work. What are the values, what are the roles, what are the fields of the social work. Now coming to the personality development, what we know about the personality first. As we know that it is a term which has been derived from the Latin word persona, which means mask. And personality can be defined as the dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influence his or her cognition, action, motivation, and behaviors in various situations. So means to say it's a dynamic and organized set of the characteristics of the individual. And it is really these characteristics influence the individual's cognition, mental state, his action in the society. It motivates to do some better for his own personality and for adopting the good behavior in different situation. So if we have a good personality, certainly we will behave in a better way. We will be motivated towards the positive direction. We will take the action
accordingly for the betterment of the individual, his family members, his peer groups, and really it will influence his own personality. In brief, we can define the personality that personality is made up of characteristic patterns of thought. So personality में we can say that it is a combination of the thoughts, feelings, and behavior that makes a person unique. तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी बिहेवियर हैं, जो कि हमें एक यूनिक पर्सन सोसाइटी का बनाती है. मीन्स टू से it is made up of the characteristics, patterns of the thoughts, feelings, and behavior. Personality may also be taken as the combination of the physical, mental, emotional, and social characteristics of an individual. So, when we are talking about that a person shall be of the sound personality, so physically, mentally, spiritually, emotionally, he must be fit. Then we can say that he is possessing a good personality. So we must be physically strong, we must be mentally sound, we must be emotionally fit, we must be spiritually fit. So it is the personality. We can say that the personality starts from the very beginning of the individually, and it continues to change in meaningful ways throughout the life span. So throughout our life cycle, personality works together right from the childhood to the death of the individual. Personality takes different shape according to the situation, according to the uh, place, birth of the individual. That's why we can say that personality changes with the age of the individual. So we can focus that personality can be made better. We can take good decision. How the personality is developed so far? So in the background, what we know about the personality development, we can say that the personality of the individual is the combination of the individual's qualities, characteristics, attitudes, psychological traits, beliefs, and motives, which make up his identity. So in the personality, we have certain qualities, we have own certain characteristics, we have the attitudes, we have certain traits, beliefs, motives. These all the things, all the component of the personality work together for the development of the individual. Therefore, we can say that personality development improves all spheres of the individual's life. So, चारों तरफ एक जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसमें जब डेवलपमेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि रियली वी हैव द गुड पर्सनालिटी एंड वी हैव डेवलप्ड पर्सनालिटी. For the personality development, we can say that the real meaning of the personality development is to enhance self-esteem. We have our self-esteem that must be honored, and that self-esteem will improve the social skills
and develop potential. So really, personality development enhances the social skills and the potential of the individual. In the larger social sense, the personality development includes the happiness of human being, and that happiness of the human being may be fostered for self-awareness and self-esteem by developing talents and facilitation. So when we will able to develop the talents, certainly certain things will be facilitated towards the self-awareness and creating the self-esteem. Now, we can say that personality development include first awareness of self, self-knowledge, building self-identity and self-esteem, spiritual development, talent development, identifying potential, acceptance of responsibility for self, enhancing the quality of life, improving physical and mental health, aspiration, fulfillment, and improving social abilities. So, awareness of self, self-knowledge, self-identity, spiritual talent and in डेवलपमेंट पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बनाया जाए, बढ़ाया जाए, ये देखना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए. हम लोग अपने सोसाइटी में सर्टेन एस्पिरेशंस रखते हैं, फैमिली में इंडिविजुअली कैसे फुलफिलमेंट किया जाए और अपनी सोशल एबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए. अब हम आते हैं कि पर्सनालिटी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वेल मीनिंग पर्सनालिटी को. पहला है नो योरसेल्फ, अपने बारे में जानिए. अपने बारे में जानने मीन्स टू से अपनी पर्सनालिटी, अपना स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, ये हमें अपने आप को जानना है. तो नो अबाउट योर सेल्फ. हम एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट है ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक. जो हमारा एक नजरिया है उसमें हमको पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ये हमारा मानना है, सोशल वर्क का ये मानना है. इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देन हैव सर्टेन ओपिनियन अबाउट द सर्टेन थिंग्स. Meet new people who will be able to enhance your knowledge, your interaction, your thoughts. Then
read more often and develop new interest. Means to say, you develop your habit of reading the books, magazines, and the things so that you may develop new interest, and you must enhance your knowledge, and which will be indirectly help in development the then be a good listener. No doubt we are the communicator. For the communication, the best part is of the good listening. When we will be able to listen some others, then we will be able to take decision according to the situation. So we must be a good listener apart from the good communicator. For a good personality, be a little fun. Then we must be cautious to the others. We must also focus and work upon our body language. Then check your attire while discussing, while talking with the others. Be yourself and be confident. ये कुछ एरियाज हैं जहां हम कह सकते हैं कि वेल मीनिंग पर्सनालिटी डेवलप की जा सकती है. अब हम आते हैं एक एक करके, जो पॉइंट हमने 12 पॉइंट्स दिए हैं उनको किस तरीके से हम अपने आप को समझ सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं. पहला है नो योर सेल्फ. अरिस्टोटल ने कहा था कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. ये वर्ड्स हैं और रियली वी आर ऑफ द सेम ओपिनियन दैट if we are knowing ourselves, certainly it will begin with the wisdom of ourselves or in the individual. और उसके लिए जरूरी है कि टेक अ गुड लुक एट योरसेल्फ. अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को वेल ड्रेस अप रखिए, अपने आप को वेल बिहेव रखिए. तो गुड लुकिंग, हैव अ गुड पर्सनालिटी. और देखा आपने भी सोसाइटी में देखते हैं कि दोज हु आर हैविंग द गुड लुक रियली दे हैव अ गुड पर्सनालिटी. सो अपने लिए भी जरूरी है कि हमें अपने लिए एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट अबाउट वन सेल्फ, एनालाइज आवर ट्रेड्स. हमारे अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और हमारी क्या स्ट्रेंथ है. क्योंकि इन सब का एक रोल है हमारी पर्सनालिटी में. हमारी अगर वीकनेस है और उस वीकनेस को कोई इंडिकेट करता है तो हमें उस वीकनेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए वी मस्ट आल्सो फोकस अपॉन आवर वीकनेस एंड वी मस्ट respect the weakness so that we may develop the strength of our personality. So जब तक वीकनेस नहीं होगी पता चलेगा, तब तक स्ट्रेंथ में हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली, हमारे अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से हम कुछ गलतियां करते हैं, हम कुछ अपनी पर्सनालिटी पे निखार नहीं ला पाते. सो ट्रेड्स को जानने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रेंथ के जरिए ट्रेड्स को दूर करें, वीकनेस को दूर करें. क्योंकि इन सब पे अगर फोकस करते हैं तो रियली हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. इसके अलावा हमें कभी भी अपने आप में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, बल्कि उस कमियों को जानने की कोशिश करेंगे तो अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. इसलिए डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग आवर फ्लॉज
and learn about ourselves as much as we can. एक जौहरी विंडो का एक फर्स्ट विंडो, आई नो माई सेल्फ एंड he knows about me, means to say there shall be the open arena in the communication. Don't hide anything from the others, means to say you must be approachable and acceptable to the others. So जितना भी अपने लिए आप जान सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करिए, और अगर कमियां हैं तो उनसे दूर मत भागिए, उनको दूर करिए, अपनी कमजोरियों को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कीजिए, और अपने ट्रेड्स को जानने को कोशिश करिए, एनालाइज करिए. इन दैट वे वी कैन से दैट सर्टेनली you will possess the good personality in the society. तो शुरुआत ही अपने आप से होनी चाहिए कि हम अपने बारे में क्या जान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, और क्या हमारे फ्लॉज हैं. तो रियली इट इज गुड थिंग फॉर नोइंग वन सेल्फ. Then next one is bring positivity in our outlook. Actually, जिस तरीके से हम सोचते हैं, we think about, ये हमारी सोच हमारे लाइफ साइकिल को बहुत अफेक्ट करती है, हमारे मोड ऑफ बिहेवियर को, पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, कोपिंग पैटर्न को, इट्स अफेक्ट लॉट. सो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए. इसलिए वी मस्ट फोकस दैट व्हाट वी थिंक, because it will affect our action in the society, in our own personality. और इसीलिए कहते हैं कि if we prosper positive thoughts in our mind, certainly it will give or develop the confidence. It will boost our confidence, and by so it will really enhance our personality. So पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को ही इनकलकेट करना चाहिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हमारी पर्सनालिटी में निखार आए. तो रियली इट्स अ गुड थिंग टू प्रॉस्पर पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड. और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी सिचुएशन को, ब्राइटर साइड को, उसकी को सोचेंगे, देखेंगे, और उसके अच्छाइयों पे नज़र डालेंगे. सो पॉजिटिव आउटलुक के लिए ज़रूरी है कि ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स हम उस पर फोकस करें, और जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें. तो अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने आउटलुक में पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हैं, और विच इज़ अ साइन ऑफ द गुड पर्सनालिटी. सो रियली bring positivity in our outlook for having the good personality. It is very much important for the individual in the society that you must have some opinion about the situation. You can communicate the things to the others. If you are not taking any interest, you are not able to form any opinion upon any issue, anything, then certainly you will not be able to mix up with the society, with the group, with the family members. So for having the opinion, क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले ये है कि हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, हमको दूर नहीं भागना चाहिए कि हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है. तो नेवर शाई अवे फ्रॉम प्रोजेक्टिंग आवर ओपिनियंस. हमेशा अपनी अच्छी ओपिनियन लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए. और अगर ओपिनियन से भागते हैं
तो सर्टेनली ये एक हमारी वीक ईगो पर्सनालिटी होगी और इसकी वजह से हम लोगों तक अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपनी ओपिनियन को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अगर दूसरे लोगों चाहे भले ही अगर ओपिनियन रखते वक्त इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट देन ट्राई टू remove the conflict through the discussions with the person, but you must have opinion. Different types of the people have the different opinion. At one point the things may be resolved, and for having the opinion it is very much necessary that we must be knowing about our surrounding, about the things happening surrounding us. So ये जानना जरूरी है, तभी हम अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सकेंगे और अपनी ओपिनियन को लोगों से शेयर कर सकेंगे। तो ये अपने आप को बहुत ही अपडेट करने की भी जरूरत है एट द टाइम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। और ऐसा करते वक्त रियली ये जब हम ओपिनियन फॉर्मेशन के स्टेज पर होंगे तो हम अपने आप में we will be proud enough to make ourselves feeling important in the society. तो ओपिनियन फॉर्मेशन ज़रूरी है और ओपिनियन दूसरों से शेयर करना भी बेहतर है। ये एक गुड पर्सनालिटी की एक निशानी है। नेक्स्ट, strategies to develop good personality: meet new people every day while interacting with each other. आप जानते हैं कि in day to day life we encounter the number of the persons, different types of the person in the society. लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, एलिमेंट है पब्लिक रिलेशन का कि हम हम लोगों से मिलते रहें, क्योंकि उनके डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसके होराइजन को एक्सपेंड करते हैं। साथ ही साथ अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक लार्जर नंबर ऑफ द पर्सन्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि हम रोज लोगों से मिक्सअप करें, लोगों से मिलें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल से इंटरेक्शन करें। और अगर ऐसा करते हैं तो रियली ये एक हेल्दी साइन होगा अपने नॉलेज को बढ़ाने का, अपने कल्चर को समझने का, दूसरे के कल्चर को समझने का और अपनी ओपिनियन को दूसरों तक शेयर करने का। सो ऑलवेज वी मस्ट इनकलकेट in our habits to meet different types of the people in the society for better aspects of the life cycle. और जब हम लोगों से मिलते हैं और जो कल्चर, लाइफ स्टाइल और लोगों को जानते हैं तो हमारी भी पर्सनालिटी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। It has the positive effect on our personality. अब हम आते हैं नेक्स्ट वन इज कि रीड मोर ऑफन एंड डेवलप न्यू इंटरेस्ट। देखिए, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इस हैबिट्स को चेंज करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर, मैगजीन्स, बुक्स या अदर आर्टिकल्स, इन सब पे हमें फोकस करना होगा। क्योंकि अगर बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट रखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू नोइंग द चेंजेस व्हाट एवर बीइंग मेड इन द सोसाइटी, व्हाट latest development in the literature, education, academics. So we must enhance our interest for reading more and more books, literature, journals, so and so. क्यों? क्योंकि if we are well informed,
then we can develop our interest. कैसा इंटरेस्ट जो कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. सो एक्चुअली कन्वर्सेशन के जरिए हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. इसलिए ये तभी होगा जब हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एट द ग्लोबल, एट द नेशनल, एट द लोकल लेवल में जो भी हो रहा है उसके बारे में जानें. और इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें कि अपनी रीडिंग इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए. तो तभी जब वी विल डेवलप आवर रीडिंग more and more things, we will be able to knowing more and more things, and it will enhance our level of confidence, and we will be able to inform the others also. मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज है और कम्युनिकेशन में हमेशा एक फीडबैक होना जरूरी है. हम एक चैनल का इस्तेमाल करते हैं, हम एक मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इन द डिसिप्लिन ऑफ द सोशल वर्क एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग वी मस्ट बी अ गुड लिसनर. इफ यू आर लिसनिंग द प्रॉब्लम, लिसनिंग टू द अदर पर्सन, accordingly we can develop the strategy to solve the problems, to develop the personality. So until and unless we are not a good listener, we will not be able to develop the strategy for the solution of the problem. कभी कभी ऐसा होता है कि when we are at the time of the counseling or at the time of the discussion, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, सुनते हैं, मतलब ध्यान कहीं और है, बैठे कहीं और है. तो इस तरीके मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई. तो एक्चुअली क्या है कि ये ज़रूरी है कि जब हम लिसन टू अदर्स हो तो हमें क्या जवाब भी देना है और क्या समझना है, ये भी फोकस होना चाहिए. इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई हमसे बात कर रहा है तो हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको सुने, उसको अटेंशन दें, उसको इम्पोर्टेंस दें. जो कम्युनिकेटर है अगर वो ये समझता है कि ना तो अटेंशन दिया जा रहा है ना कोई इम्पोर्टेंस दी जा रही है उसकी बात को, तो फिर वो अपने रिलेशनशिप को वो कट ऑफ कर लेता है और गुड रिलेशनशिप डेवलप नहीं होते हैं. इसलिए while we are talking with the others, we must develop the interest and attention and importance to the communication communicated by the others. एक बॉडी लैंग्वेज जिसमें कि आई कांटेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल है. इसलिए जब भी कभी टू वे कम्युनिकेशन हो तो हमारे आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है with the communicator of the things. हाई HRD का लेक्चर था. ठीक है. बीइंग लिसनर, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं और उनको हम और अच्छी तरीके से उनको अटेंड कर सकते हैं. तो रियली फॉर हैविंग अ गुड पर्सनालिटी वी मस्ट बी अ गुड लिसनर. अब हम आते हैं कि हमेशा आदमी को बहुत सीरियस रहने की जरूरत नहीं है. इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातचीत के दौरान कुछ फन भी होना चाहिए. कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बात करते हैं तो लोग कोई शेर व शायरी कर देते हैं, कोई एग्जाम्पल करते हैं, कोई चुटकुले सुना देते हैं, कुछ मजाक सा कर लेते हैं. तो लिटिल फन भी ज़रूरी है हमारी
गुड पर्सनालिटी के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम बहुत सीरियस दिखें, हमेशा ही हम बहुत सोबर दिखें, बट लेकिन कभी कभी हमारा एक लिटिल फन कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में लिटिल फन का इस्तेमाल करें, और इससे ये एक हमारी पर्सनालिटी में निखार आता है, और रियली इट्स बिकम अ चार्मिंग पर्सनालिटी। आपने देखा होगा कि जो इस तरीके के लोग बीच बीच में कुछ छोड़ते बातें डिस्कस करते रहते हैं, उनसे लोग बहुत ही उनसे अटैच होते हैं, उनको एक्सेप्ट रिगार्ड देते हैं, लव करते हैं, और ये चीज़ अगर अपनी लाइफ में रेगुलर वे में हम अडॉप्ट करते हैं तो सर्टेनली वी आर वेलकम्ड बाय द अदर्स। तो लिटिल फन भी ज़रूरी है, बी सीरियस, बी सोबर, बट नॉट ऑल द टाइम, but sometimes to be a little fun is important for our good personality. अब आते हैं कि नेक्स्ट जो फॉर गुड पर्सनालिटी है, ये कॉन्शियस होना ज़रूरी है, दूसरों को रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देना ज़रूरी है। इसलिए जब भी किसी से मिलते हैं बहुत ही हम्बल तरीके से, और हर शख्स को हम ग्रीट करें विद स्माइल। तो मुस्कुरा करके लोगों से मिलना चाहिए, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस से लोगों से या लोगों को से मिलते वक्त हम्बल तो हों, और उनको जो ग्रीट कर रहे हो, उनसे वेलकम कर रहे हो, तो एक स्माइलिंग इन ऑन आवर फेस मस्ट बी देयर। इससे ये होता है कि रियली आप बहुत अच्छी तरीके से आप मिल रहे हैं, और बाय डूइंग सो इट इज अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अगर लोगों की आप इज्जत करते हैं, लोगों को अब आप एक प्लेस देते हैं, ऑनर करते हैं, तो ये सभी लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं। और एक चीज़ और भी है कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो और हेल्प कर रहे हो, तब कभी भी आप उससे भागिए नहीं, कि क्योंकि दे आर इन नीड ऑफ यू, एंड इफ यू आर एबल टू assess the problem, you are able to solve the problem, you are able to facilitate the things, you are able to manage the thing. Don't shy away from helping and supporting. Really, whatever you have, whatever the resources are available, you try to help and support the individual who is in need of care and protection. थोड़ा सा और रह गया है। अब हम आते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। हम कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, या कैसे अपने आप को दूसरों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये बहुत एक वैल्यूएबल सोर्स है एक गुड पर्सनालिटी का। If you are confident, you will be sitting in a very good position. If you are confident, you will walk confidently, you will talk to with confidence to others. So it's necessary that we must have the strong, correct body language. इसीलिए कहते हैं कि जब आप वॉक करें तो उसके आपकी पोजीशन अपराइट हो और सोल्जर्स आपकी स्ट्रेट हो, आप बुझे बुझे से ना दिखें, और रिलैक्स्ड पोस्चर में आप बैठें और आई कांटेक्ट बनाए रखें व्हाइल स्पीकिंग विद द अदर्स। तो बॉडी लैंग्वेज में सिटिंग पोजीशन है,
मूवमेंट ऑफ द हैंड्स है, आई कांटेक्ट है, टोन ऑफ वॉइस है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से शो होता है कि आप रियली कितनी अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। देन चेक योर अटायर, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक डिज़ायरेबल इम्प्रेशन बनाना है तो अपने अटायर को इम्प्रूव करना होगा, अपने अटायर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका अटायर, आपका ड्रेसअप, आपका स्टैंडिंग पोजीशन, आपका वेल ऑफ स्मार्ट लुकिंग पर्सनालिटी। तो इससे होता क्या है, व्हेन यू आर हैविंग अ गुड अटायर, देन सर्टेनली यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस लेवल, it boosts up your confidence, and for that you are to be dressed appropriately। और हमेशा आपको डिसेंट मैनर में ड्रेसअप होना होगा, और इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप किस सराउंडिंग्स में हैं, आप कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस सिचुएशन में आप इस वक्त हैं। तो ये आपको भी देखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग यू विल हैव टू मेंटेन योर अटायर। अब हम आते हैं, एक दो स्लाइड्स और हैं। बी योर सेल्फ। हम ये मान के चलते हैं कि हम सभी अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग फ्लॉज हैं, लेकिन अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपने बारे में जानेंगे नहीं, अपने स्किल्स को, अपने फ्लॉज को, तो लोग हम पे एक अलग नज़रिया रखेंगे। इसलिए अपनी कमियां को दूर करने के लिए दूसरे के ऊपर हमको प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन बल्कि अपने जो आपका अपना वर्जन है, इसको आप देखें और अपने आप में इम्प्रूव करें। देन लास्टली, बी कॉन्फिडेंट। Confident means to say, be confident about yourself, what you are and what you are doing. It is the important component of the good personality. What you are and what you are doing, we must be considerate enough about our confidence. नेवर डाउट योर कैपेबिलिटीज। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी क्वालिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज पे कभी अपने आप में डाउट न मत करिए कि हम अंदर ये कमियां हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप वर्क हार्ड करिए अपनी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, और ताकि आप उससे ओवरकम कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। तो कॉन्फिडेंस होना हर कामयाबी की एक निशानी है, हर अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है। इसलिए हम अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जस्ट एवरीथिंग यू डू, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड पुट इन योर हार्ड वर्क। तो लास्ट मैसेज है कि whatever you do the just, and you must have faith on yourself and do the hard work. So thank you very much for listening to me. Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm thankful to the HR center. I'm thankful to the coordinator, the
that is the giving platform to really share my views, thoughts, opinion about having the personal. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. सर आपकी स्क्रीन दिख रही है, हटा लीजिए। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी बताइए, क्या हाल है? क्या आपने कहीं ज्वाइन किया था? आज 7 का लीव हो जाए सभी। Sir, you are in live, sir. Thank you, sir. कैसे हैं ज्ञानचंद जी? बढ़िया है सर। Session is finished. और बताइए सर। सब फर्स्ट क्लास है। आज तो लखनऊ में है धरना। हाँ, आज लखनऊ में गए नहीं। 2 तारीख को पीपीगंज में मीटिंग थी, तो वहां पर गए, वहीं पर पता चला कि जाना है लखनऊ, फिर लखनऊ जा नहीं पाए क्योंकि इधर का कार्य। राजेश सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। लखनऊ में किस वजह की मीटिंग है, वो धरना है सर? वो ओपीएस और कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर। ओपीएस के लिए है। पूरे यूपी के हैं लोग, ऑल ओवर यूपी। कल तो टेस्ट भी होगा सर, कल ही 5 तारीख है। हम लोगों को क्या वो मिल गया है क्या, होमवर्क मिला क्या अभी? नहीं मैडम, अभी नहीं। कल टेस्ट होगा सर? हाँ, कल शेड्यूल में है, कल 3:30 से 4:30। लेकिन 3:30 से 4:30 वाली सेशन चल कहाँ रहा है इस समय? उस टेस्ट में होना क्या है? टेस्ट होगा। चले ना चले 20 क्वेश्चन टेस्ट में होना क्या है? रहेंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जाएंगे, जो होगा हम लोग आंसर देना होगा। तो ऑनलाइन ही हल करना होगा। इसी पे, जिस ग्रुप पे है व्हाट्सएप पे, उसी पे आएगा और उसी पे हम लोग को फिल करके उसी पे पोस्ट कर देना है। जैसे कुछ फॉर्मेट नहीं आता है कि ऑनलाइन किसी आप इसको भर के आप सबमिट कर गूगल दीजिए। की तरह गूगल फॉर्मेट उसी तरीके से आएगा। भरने के लिए जी जी। कुछ टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम के अंदर करना होगा। 1 घंटे का टाइम है। जैसे टाइम दिया गया इसलिए कि नेटवर्क इशू हो सकता है। 20 सवाल के लिए 1 घंटा?
नहीं मैडम, एक घंटा नहीं है, 1 बात hour है। बात है कि बात नेटवर्क मैम आप इशू के पहले भी लिए, कर कहीं सकते इधर हैं। उधर। आप 5 मिनट में कर दिए, लेकिन टाइम दिया गया घंटे के अंदर सबको कर देना है। शेड्यूल में 3:30 से 4:30 है। चलो आप सर गूगल में खोजना भी तो पड़ेगा। ताकि 1 घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई कहीं बाहर है, अचानक कहीं नेटवर्क इशू है, तो उस टाइम में कम से कम कहीं तो पहुंच के कर ले। क्लासरूम में तो एक होता है कि हाँ क्लासरूम बैठे हैं सामने, लेकिन अगर आदमी कहाँ पे है, और चीजें भी हो सकती हैं, सबकी सहूलियत के लिए है। मैक्सिमम टाइम दिया गया है जिससे सभी लोग कर ले, सारे पार्टिसिपेंट सबसे कंप्लीट। ज्यादा जरूरत है कि आप पर डे आप क्लास में कितना पंक्चुअल हैं, ये सब बहुत मायने रखती है। जी वो तो अटेंडेंस में मिल जाएगा ना कम मार्क्स। सेमिनार में क्या होगा? सेमिनार का भी कुछ शेड्यूल नहीं आया सर। और उसमें क्या शांति क्या बनाए करना होगा? सर, उस पे जैसे शांति माइक्रो बनाए। टीचिंग का आपने दिया है वीडियो बनाकर, वैसे सेमिनार के लिए भी होगा। 10 मिनट लगभग मान के चलिए, कम से कम तो टॉपिक देंगे ना? 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। हाँ, टॉपिक मिलेगा सबके लिए, शायद सेम टॉपिक मिले, ये हो सकता है। जी अभी जब तक नहीं आ रहा तब तक इस पर चर्चा नहीं की जाए। हाँ, ज्यादा ये हाँ, भी बिल्कुल आप सही है सही आपका। कह यार रहे हैं। ग्रुप आ ही जाएगा सबके नहीं लिए। नहीं, उसकी चर्चा मत कीजिए, कल की चर्चा कीजिए। कल हाँ, टेस्ट तो अभी होना है अभी ना, अभी वो तो टेस्ट पे फोकस कंपलसरी किया है। जाए। ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हैं। हाँ टेस्ट मेन है, टेस्ट पे फोकस किया जाए कल। देखिए सर, सेमिनार सेमिनार अब नहीं होने वाला। अरे सर यहाँ पर नहीं बताना है। वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मत बोलिए। रिकॉर्डिंग है। समझ लो, अरे सेमिनार हो ही गया कोई ना, अब बात आपने नहीं, माइक्रो रिकॉर्डिंग टीचिंग हो रही डाल दिया तो वो भी एक प्रेजेंटेशन ही है, और क्या है। सब लोग ये है कि हर कोई ठीक है सर। प्रेजेंटेशन तो दिया ही है बाकी। प्रेजेंटेशन तो हो रही है ना आपकी, अपना टॉपिक प्रेजेंट किया है तो वो प्रेजेंटेशन भी हो गया और आपकी नॉलेज भी चेक कर दी जाएगी। फॉर्मल, ये सब फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं सब डिस्कस करना चाहिए। आप बाकी जब देना होगा सर खुद ही मैसेज कर देंगे ग्रुप पे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से डिले हो चुका है उस बेसिस पे कह रहा हूँ। नहीं, डिले कुछ नहीं हुआ सर, ये तो सारी चीजें लास्ट में कराई जाती हैं 2-3 दिन के अंदर। हाँ लास्ट में होती है, अभी है हमारे पास टाइम, हाँ आ लेकिन जाएगा लेकिन हमारे पास। हाँ, क्योंकि बीच बीच में हम लोग को हम बर्डन कम होता गया है, ये मान के चलिए। आप में से केमिस्ट्री पीरियड का कौन कौन है? कोई है? एनीबॉडी केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से नहीं थे। आवाज नहीं आ रही मैडम। केमिस्ट्री से अच्छा, केमिस्ट्री से और कौन कौन लोग हैं? Good morning, everyone. I have sent to all of you a message in group. Please share your contact numbers on my number too. Personally, chemistry belongs to botany subject. Thank you. चला जाए, अब कल मिला जाए। चलिए सभी को नमस्कार। ठीक सर। अपना कॉलेज भी शेयर कर देना प्लीज, स्टेट एंड कॉलेज नेम। बॉटनी वाले। यस मैडम, जो हाँ बॉटनी वाले जो वहाँ से कर लेंगे। जी जी, थैंक यू। जो शुरू में लिस्ट आई थी टीचर्स की, उसमें सारे टीचर्स का नंबर भी होगा, ईमेल आईडी भी होगी और सब्जेक्ट भी होगा, कॉलेज नेम भी होगा, सब कुछ होगा। आप लोग वहीं से देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। अगर आप डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, है ना, एनी फंक्शन, फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, टू राइट अ बुक, जर्नल, पब्लिकेशन पर्पस के लिए। थैंक यू। चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। अब चला जाए, 12 बज गया। ओके सर, गुड आफ्टरनून। ओके सर, थैंक यू सो मच।
अच्छा मम्मा पास आ जा